নমস্কাৰ, মই আৰ নিউজত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি 2 ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ নলবাৰী জিলাৰ আদাবাৰী গলদিঘলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এক বিৰল আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ থাকিল। যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে নানা অজুহাতত কেইবাখনো ৰাজহুৱা বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, সেই সময়তে বীমা কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ দুটা সৰ্বভাৰতীয় সংগঠন সদৌ ভাৰত বীমা কৰ্মচাৰী সমিতি আৰু সদৌ ভাৰত বীমা পেঞ্চনাৰ সমিতি অসমৰ এই বান বিধ্বস্ত ৰাজহুৱা বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ সাহায্যতে আগুৱাই আহিছে। বীমা কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ পৰা সংগ্ৰহিত ধনেৰে এই দুটা সংগঠন বা গলদিঘলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বহুকেইটা শ্ৰেণী কোঠাৰ পকীকৰণ আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু বিদ্যালয়ৰ ৩.৫ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত স্কুল বেগ বিতৰণ কৰে। এই উপলক্ষে বিদ্যালয় চৌহদত 2 ছেপ্টেম্বৰত হোৱা এক অনুষ্ঠান আৰু সভাত সদৌ ভাৰত বীমা কৰ্মচাৰী সমিতিৰ সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীকান্ত মিশ্ৰই যোগ দিয়ে। সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে পুনৰ নিৰ্মিত শ্ৰেণী কক্ষবোৰৰ উদ্বোধন কৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত স্কুল বেগ বিতৰণতে ভাগ লয়। সভাত বক্তব্য ৰাখি শ্ৰীকান্ত মিশ্ৰই কয় যে অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে বীমা কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰ সমিতিও গোটেই দেশজুৰি বৰঙণি সংগ্ৰহৰ আহ্বান জনাইছিল। নিৰ্মাণ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিঞ্চিত পৰিমাণে হ'লেও ভূমিকা ল'ব পৰাৰ বাবে তেওঁ সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী তথা সম্প্ৰসাৰিত নহ'লে গণশিক্ষাৰ বিস্তাৰ নহ'ব আৰু অশিক্ষাৰ এন্ধাৰৰ পৰা দেশখন মুক্ত নহ'ব। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপৰিও ভালেসংখ্যক স্থানীয় ৰাইজে সভাখনত যোগ দিয়ে। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰিয়াজুদ্দিন আহমেদে বক্তব্য ৰাখি বীমা কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰ সন্থাৰ দুটাৰ শলাগ লয়। জীৱন বীমা নিগম পেঞ্চনাৰ সন্থাৰ গুৱাহাটী সংমণ্ডলৰ যুটীয় সম্পাদক ভৱেন্দ্ৰ কুমাৰ কলিতা, গুৱাহাটী বিভাগীয় বীমা কৰ্মচাৰী সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক পীতাম্বৰ ৰাজ ভাণ্ডাৰী, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাধাৰণ বীমা পেঞ্চনা সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা, অসম ৰাজ্যিক কৃষক সভাৰ সম্পাদক ত্ৰিকেন দাস, CITUৰ অন্তৰ্ভুক্ত নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ স্থানীয় নেতা জয়নাল আলী আহমেদ প্ৰমুখ্যে সভাত বক্তব্য ৰাখে। সদৌ ভাৰত বীমা পেঞ্চনাৰ সন্থাৰ সৰ্বভাৰতীয় সভাপতি সত্যঞ্জীৱ দাসে সভাত সভাপতিত্ব কৰে। দুটা ইউনিয়ন জনকল্যাণকামী ভূমিকাই স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ আৰু আশাৰ সঞ্চাৰ কৰে। इस स्कूल के हेडमास्टर रियाजुद्दीन अहमद साहब, असम स्टेट किसान सभा के सचिव माननीय टिकेन दास जी, मंच पर बैठे हुए हमारे स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष शाह आलम अली जी, मंच पर बैठे हुए विभिन्न संगठनों से आए हुए हमारे नेतृत्वकारी साथी, इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका, बच्चों के गार्डियन और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम साथियों को अपने तरफ से, अपना संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से आप तमाम साथियों का हार्दिक और क्रांतिकारी स्वागत करता हूं। मुझे दुख है कि मैं अहमिया में बात नहीं कर पाऊं, लेकिन हमारे प्रधान शिक्षक साहब ने जो गाना गाए, क्या हुआ तेरा वादा, उस गाना सुनने के बाद जिस हिसाब से बच्चों ने झूम उठ रहे थे, मुझे पूरा यकीन है कि आप हिंदी सही मायने में समझ जाएंगे। तो भाषा की कोई अहमियत नहीं है, अहमियत मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं आप अगर समझ गए तो वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, तेलुगु हो, कोई मतलब नहीं है।
पहली बात कि हमें बेहद खुशी है कि हम आपके बीच आए हैं। दूसरी बात है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में यहाँ बारिश के बाद जो हालात बिगड़े हुए थे, आपके हेडमास्टर साहब को नाव लेकर के स्कूल आना पड़ रहा था। तो बच्चों की क्या हालत हुआ होगा हम लोग तो सही अंदाजा हो सकता है। अब सवाल है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, LIC में जो लोग काम करते हैं या काम करते थे अब रिटायर कर चुके हैं, LIC का नाम सुने हैं ना? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी स्लोगन है LIC का। LIC में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो काम कर चुके हैं, जनरल इंश्योरेंस में जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, जो काम कर चुके हैं, इन्होंने ये क्यों तय किया कि आसाम में गुवाहाटी से लगभग 40-30 किलोमीटर दूर गल्डी गला में आकर के एक स्कूल को रिपेयर करने के लिए मदद करेंगे। हम लोग तो नेता है नहीं कि आप वोट के लिए कुछ काम करने के लिए आएंगे। हम कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं। हम लोग इसीलिए आए, और क्यों आए, शायद आपके हेडमास्टर साहब ने गाने के माध्यम से उसको बताए, क्या हुआ तेरा वादा। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने आजादी का जश्न मना रहे थे, झंडा फहराए थे ना। आज से 75 साल पहले देश को जब आजादी मिली, जो लोग इस देश की आजादी के लिए शहादत दिए थे, कुर्बानी दिए थे, सैक्रिफाइस किए थे, वो हम लोगों को कुछ कह करके गए थे। क्या कह करके गए थे? आजादी के बाद एक पुरानी हिंदी फिल्म में एक गाना है, उस गाना शायद ये बयान कर रहा है कि जो पूर्वजों ने आजादी के लिए लड़ाई किए थे, इन्होंने क्या दायित्व दिया था हम लोगों को। उन्होंने कहा, हम लाए हैं समंदर से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को बच्चे